इंडियंस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें इतराफ़ किया गया जब उनसे पूछा कि राफेल गिरा है तो उन्होंने कहा कि जंग में नुकसानात होते रहते हैं। तो दुश्मन की तरफ से इतराफ़ करना कितना उसका इम्पैक्ट है। दूसरा सवाल ये है कि सर एक दिन पहले जब नायब सदर से सवाल किया गया कि इंडियन पाकिस्तान कशीदगी चल रही है तो उन्होंने कहा इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, लेकिन वो क्या हुआ कि एकदम से उनका बिजनेस भी हो गया और उन्होंने मोदी को कॉल भी की। कहा जा रहा है क्योंकि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उनके साथ लग गई थी। तो क्या नेशनल कमांड अथॉरिटी की जो मीटिंग थी उसके बाद हालात बदल गए, जज्बात बदल गए? आप राफेल का कर लो जी। देखिए, हम एक बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स हैं। इंडियन एयरफोर्स भी बहुत प्रोफेशनल एयरफोर्स है, एक आर्म है। एंड वी हैव अ काइंड ऑफ अनसेड अनरिटन वाव इन बिटवीन दैट। हम एक दूसरे की प्रोफेशन उस पर कोई वो नहीं करते। माई जॉब इज़ टू डिफेंड माई कंट्री, हिज जॉब इज़ टू defend his and perform his duties. They can appreciate it. I appreciate it that they have accepted it because it's evident. You can see it in the air, on the ground. Everybody is looking at this, satellite pictures for that. So he had no other choice, I guess. And, I told you there are 3 Rafales that are missing. So one MiG-29, one Su-30. जो आपने बात की, देखें मैं आपको पहले ये अर्ज किया है and I will repeat it. Military conflict or war between 2 rival nuclear states is absurd, inconceivable, and sheer stupidity. So, once the India thinks that it wants to carve out space for war between India and Pakistan, it is not carving out space for war. It is a recipe for mutual annihilation. Therefore, there is no space for war. And the world knows it. And you saw it. In this conflict, Pakistan exercised escalation control. We acted very maturely. We used our conventional forces, we gave up notch-up response, and we didn't even pull any force from our western front. We kept on continuing to conducting the counter-terrorism operations without any pause. And while doing that, we were the one who were maintaining escalation control. And you saw that manifestation, that on the morning of 10th, who is asking that we don't want to de-escalate? We don't want to escalate. And if Pakistan is willing to de-escalate, then we will also de-escalate. Who is asking that? Publicly. So the escalation control was with Pakistan. We were acting very maturely. And we understand that this notion of carving out space, it is madness. And that's why you said, that's why what you referred to, the world community, the international players, they very well understand that. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।